Hi everyone, this is CA Avishi Gupta. I qualified my chartered accountancy in November 2023. In this video, we are going to discuss about the strategy for integrated business solutions and strategic management. So there's a buzz around this subject that it is very vast. It covers all the subjects and how should we deal with it. It would be a very hefty job. To be honest, this subject would be actually easy to deal with because you don't have to study something extra. You only have to apply the knowledge of all the subjects you've studied, like all the 5 subjects, and your law and strategic management together to solve a case study which involves different issues, and you have to answer the questions to that. So, what should be some might ask, what should be the materials we have to carry? What should be the material we should use to study it? When should we start studying it? How to deal with this case studies? And what should be the strategy to prepare with it? So I am here with this video talking about the materials, everything you want to know. For 1.5 day strategy, we will make in another video. So stay tuned to the channel for that video. Okay, so let's start from the materials. So what are the materials you should use? The first and foremost priority should be ICI case studies, because ICI has given new case studies. Earlier, the multidisciplinary case study booklet was also there. So you can also use that book. And in addition to that book, you have to use the new case studies. There are 15 to 20 case studies provided by the ICI for new syllabus. You have to do those case studies as well. So ICI case studies done. Another thing which you have to do is another material. You have to study your 5 subjects well. So thing would occur, how well? What is the definition of well? So it's basically you have to complete the subjects. You can start with IBS either after your first revision or after completing your second revision. What's the difference? Let me tell you. After first revision, only 40% of the syllabus would be in your mind. Up to 40%, I can say. Even not exactly 40%, approx 40% or up to 40%, we can say, you will remember. So what you need to do is use that 40% and solve the case studies. After remembering that 40%, solve the case studies. What will happen? You will start getting conceptual clarity of the subjects, because in case studies everything is intertwined. So once you start moving your mind in that way, like once you start solving the scenarios, understanding the issues, and then providing the solution, you will think about the subject and you will automatically revise it once again. So if I say once you've done your first revision, you can start with each case study a day and pace your second revision accordingly. So, let's say you take 1 case study per day and 1 or 2 case studies per day, and take around maximum, I think 2 hours will be consumed for solving 2 case studies. If you have a good grip and if you have someone to solve the case studies with, like if you have a group of friends who are doing CA final and are at the same level as you, so you can start with them to solve the case studies. You can start with 2 case studies per day or 1 case study per day. As you progress, you will automatically increase the number of case studies, because it will also help you revise your subjects and also help you improve your learning. So you can give around 2 to 3 hours, max to max 2 to 3 hours, not more than that, in a day. Another thing which you can do is you can start with the subject after completing your second revision. After completing your second revision, yes. Now, if you are doing it after completing your second revision, this I have covered below. If you do 1 CS daily after the first revision, अलग से कोई दिन नहीं देने हैं. You don't have to put in days separately. But if you are doing the case studies after the second revision, तो आपको एक बार बैठ के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको, एक बार बैठ के पूरा टाइम देना पड़ेगा, like around 10 to 15 days. बट उससे ज्यादा स्ट्रेच मत करना, क्योंकि सेकंड रिवीजन के बाद आपके पास टाइम बहुत कम बचता है. एंड मैक्सिमम लोगों का अब तक आई थिंक फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज 19th of January. सो अराउंड फर्स्ट रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, लाइक टिल जनवरी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो अगर आप इस फर्स्ट रिवीजन के बाद केस स्टडी स्टार्ट करते हो,
ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 15 केस स्टडीज यहाँ पे है एंड 35 to 40 केस स्टडीज पुराने वाले बुकलेट में है, तो आप प्रॉपरली इन चीजों को कवर कर सकते हैं, राइट। वन और टू केस स्टडीज पर डे। बट अगर आप सेकंड रिवीजन की बात करते हो देन यू हैव टू पुट इन 10 to 15 days एंड पूरा का पूरा यू हैव टू डू IBS ओनली। So this, if you're comfortable with giving 10 to 15 days solely to IBS, then it's all good. You can do that. It's your choice. It's your call. Or you can start it after first revision and continue it. Okay, because there are many case studies. So you cannot say that I'll do one CS per day and complete it in 15 days. It's not possible. So you have to regularly give days so that you are in that mindset. Yes, I have to solve case studies. I have to think like that. Think like that. So that might be a good option in my opinion. Further, so this is completed. Like when to start with the subject, what materials. Another thing in materials is all of the 5 subjects you have to do completely, including your strategic cost management and law. Okay, then you have to start with index of both case studies and concept index. So what is index of both CS and concept index? Look, CS is something case studies index, which means you have to bifurcate the case studies by subjects and by separate topics. If there is a major topic, suppose there is a case study and there is a DT, trust topic, FR, let's say index 115, and let's say okay, let's take these two. So if you have FR 115 index and DT trust topic, so in your index you should bifurcate it like direct text, concept covered, trust. Then the next point you have to write FR concept covered 115. Then mark the question, because there might be questions. There will be questions like about trust, about 115 in the case study. So do that case study. I'll also share a sample index for this subject, so that you'll have a better understanding of what to do with the case study index and what to do with the concept index and how to prepare it yourself, right? Because the things you do yourself have a more impact on you, because बाहर से कहीं से भी मिल जाएगा ना, it won't add value to you. अगर आप खुद बनाओगे तो ज्यादा वैल्यू मिलती है उससे। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका मटेरियल्स कंप्लीट हो जाते हैं जो आपको मेनली अब यूज करने हैं और साथ साथ बनाने हैं। और इंडेक्स अगर आप साथ साथ बनाओगे ना केस स्टडी सॉल्व करते हुए, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी कि मुझे इंडेक्स में एक्चुअली चाहिए क्या होगा उस टाइम पे। क्योंकि ऐसा तो होगा आप एक इंडेक्स बनाओगे, आपको हटाना पड़ेगा कि नहीं दिस इज नॉट गुड, फिर आप दूसरे इंडेक्स बनाने की ट्राई करोगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। एंड एट द एंड आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे कि आपको एक्चुअल में एग्जाम में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्या टूल होना चाहिए आपके पास जो आप फटाफट से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर पाओ कि कहाँ क्या है, और अगर मुझे कोई चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है तो कैसे कर जाए। राइट, तो ये चीज आपको खुद से आएगी, क्योंकि जो चीज मेरे लिए वर्क करेगी इट वोंट वर्क फॉर यू, राइट। Now how to deal and solve the CS. So what I have observed in the CS, because my friend also started doing the CS to get an idea of how the subject has been prepared by the institute. So what he identified was some case studies are bit intertwined, like many indices are bit complicated. Some 2 to 3 CS are, let's say 20% CS are complicated. Rest are very easy because there will be one paragraph about, let's say DT, one paragraph about FR, one paragraph about audit. So these case studies are separate, but let's say you have 5 different questions. So they have put in 5 different questions, 5 different scenarios in one CS. And then they ask you questions, MCQs and descriptive questions. Now, how to deal and solve the CS. तो while studying आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पे चले जाओ। अभी आप जब पढ़ रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द CS इन योर एग्जाम्स, आई एम talking about the strategy to solve the case study while you are studying, while you're preparing for it. Okay, so first you have to read the questions, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू एज पर योर चॉइस, विच एवर यूर कंफर्टेबल विद। और आपको देख के पता चलेगा कि आपको डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा आइडिया लग रहा है केस स्टडी का या फिर एमसीक्यू से। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्क्रिप्टिव से आइडिया लग जाता है। ओके, सो रीड द क्वेश्चंस, रीड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई कि केस स्टडी में एक्चुअल में पूछा क्या है, व्हाट इज द केस स्टडी अबाउट। देन आइडेंटिफाई इफ द सीएस हैज सेपरेट पैरास अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
जो मैंने बताया, FR का अलग, ऑडिट का अलग, DT का अलग। आपको क्या करना है, मार्क करना है, क्योंकि आपको वहां पे जब आप पढ़ते हो ना, आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार ये FR में 115 से रिलेट करता है, ये 109 से रिलेट करता है, आप वहीं पे मार्क करके लिखो 109। आपको पता है ये DT में PGBP में वाला सेक्शन पूछ रहा है, बेड डेट्स वाला 41 वाला सेक्शन पूछ रहा है, 40 वाला सेक्शन पूछ, लिख दो वहां पे। ओके, ये चीज वहां पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई भी आपको मिलता है कि कोई भी सिनेरियो है जहां पे आपको कोई की पॉइंट पूछ रहा है, वो और ट्रिकी लग रहा है आपको, मतलब आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं आई उसको लेकर, उस पॉइंट को लेकर, मार्केट, ठीक है। फिर आप MCQs पर आओगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आओगे, क्योंकि आप फर्स्ट पे क्या करोगे, MCQs को सॉल्व करोगे, बिकॉज MCQs आर रियली स्कोरिंग, ओके, स्कोरिंग, और MCQs में ज्यादा मार्क्स आते हैं इसके। ओके, MCQs इजी होते हैं। देन स्टार्ट सॉल्विंग MCQs, उससे भी ना आपके माइंड में क्लैरिटी जागेगा केस स्टडी को लेकर। देन सॉल्व दी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। This would be an ideal way to deal and solve the case study while you are studying and preparing for it. Because many concepts will come. बहुत सारे concepts आएंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस पेपर को ओपन बुक बनाया है, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ अगर आपको दे दिए जाएंगे, यू विल थोड़ा सा घबरा जाओगे कि करना क्या है इसमें, ठीक है। ये आपकी मेंटली आपको खेल रहा है ये पेपर मैं बता, ये पेपर आपकी टेक्निकलिटी नहीं खेलेगा, ये पेपर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ खेलेगा कि कैसे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कैसे घबराना नहीं है। इस सब्जेक्ट में इजी केस स्टडीज आएंगी, ओके, एक आध हो सकता है कि थोड़ी डिफिकल्ट आए, बट आई थिंक ये सब्जेक्ट काफी इजी रहने वाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर एग्जाम्स में आप पहले 5 सब्जेक्ट्स इतने लगातार बढ़िया तरीके से करते आ रहे हो, बिकॉज यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स, एंड लास्ट में आपको बस एक एग्जाम ऐसे देना है जिसमें सारी चीजें मिलाकर आएंगी, आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी हेफ्टी जॉब, राइट। वैसे भी 6 सब्जेक्ट्स हैं, दे आर नॉट 8 सब्जेक्ट्स, राइट। इट विल बी इजियर फॉर यू। सो स्टडी के टाइम पे फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, कि केस स्टडी में किस तरीके से कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा रहा है, एंड हाउ शुड आई राइट द आंसर, बिकॉज आंसर्स यहाँ पे अब ऐसा नहीं है ना कि आप अपने मन से लिख रहे हो, यू हैव टू यूज द मटेरियल और यू हैव टू यूज द केस स्टडी टू राइट द आंसर्स, क्योंकि ओपन बुक है। सो इट्स नॉट लाइक आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। आपको आइडिया लेना है एंड देन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आप कॉपी भी कर रहे हो कोई चीज एग्जैक्टली सेम आगे, बिकॉज आती है एग्जाम्स में से, क्योंकि मैंने GFRS वाला पेपर दिया था एंड उसमें 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल FR से सेम आ गए थे, जस्ट फिगर्स ऊपर नीचे थे, ठीक है, एक आध लाइन ऊपर नीचे थी, दैट्स इट। तो अब आपको एज इट इज कॉपी करना है ना, तो कॉपी करो, बस थोड़ी सी फ्रेमिंग थोड़ी सी डिफरेंट करो, थोड़ी सी डिफरेंट, अ लिटिल बिट डिफरेंट, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी लगे। फैकल्टी को, जो एग्जामिनर जो चेक करे, उसको ऐसा ना लगे कि इसने कॉपी पेस्ट करा है एग्जैक्टली, राइट। ये चीज आपको करनी है। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करें केस स्टडीज को, एग्जाम में आपको बेसिकली क्या करना है ना, स्टेप्स यही वाले फॉलो करने हैं, यही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं, बट इससे पहले एक स्टेप और फॉलो कर लेना, इंडेक्स में जाके देख लेना कि केस स्टडी की रिपीट तो नहीं हो रही। बिकॉज क्या हो सकता है, मान लो आपके कोई, आपने CS वाला इंडेक्स बनाया था एंड एज इट इज केस स्टडी आ गई, उससे मिलती जुलती 2-4 चीजें ऊपर नीचे होकर आपको केस स्टडी मिल गई, you will be in a position to solve that case study very easily. So identify those case studies at first. If you're not able to identify very quickly, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ये नहीं मिल रही, तो छोड़ दो उस चीज को, आप उसमें टाइम वेस्ट मत करना, उसमें टाइम वेस्ट मत करना उस समय कि आप केस स्टडीज को ढूंढ रहे हो बैठ करके कि कहाँ मिल जाए मिल जाए मिल जाए। एक दो बार ट्राई करना, मिल गई और वेल एंड गुड, कोशिश नहीं मिली तो घबराना नहीं है, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। आप ऐसा सोचते क्यों कि आपको कुछ आएगा नहीं, ठीक है। If you are studying those 5 subjects diligently, giving the papers, and then you are jumping at the sixth paper, jumping towards the sixth paper to solve the CS, why won't you know the answers? Why won't you know the concepts? Right? You just have to be patient, be calm, and think about those. और इसलिए अगर आप रोज एक CS करोगे ना, आपके दिमाग में आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, फेमिलियरिटी बनेगी केस स्टडीज से लेकर। बिकॉज मैंने जब तैयारी करी थी अपने GFRS पेपर की, मैंने भी एक साथ केस स्टडीज नहीं करे थे, ओके। हमने दिन में वी यूज टू गिव
2 to 3 hours डेली, और तब भी हमने 10 to 15 days में कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज इट वॉज FR. सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड, राइट. बिकॉज पहले क्या होता था ना, GFRS से क्वेश्चन उठ के FR में चले गए थे, तो हमने जब ऑलरेडी FR प्रिपेयर कर लिया था तो FR के क्वेश्चन वहां सेम रिपीट हो रहे थे, तो हमने वो स्किप करे और हमने जो नया पार्ट था वो करा. तो रोज 2 3 3 4 केस स्टडीज करके भी हमने 5 to 6 days में, टू बी ऑनेस्ट 1 वीक में हमने सारी केस स्टडीज निपटा दिए थे. एंड देयर वर अराउंड 47 केस स्टडीज. ओके, अराउंड 1 and 1.5 week हमने कंप्लीट कर दिया था. आपको भी यही चीज फॉलो करनी है, आपको प्रॉपर अपना टाइम देना है, इसको लेके इसको बर्डन नहीं बनाना है अपने ऊपर. अगर आप रोज एक CS करोगे तो बर्डन नहीं है, बिकॉज अभी भी आपके पास बहुत टाइम है. अगर आप 1 Feb से भी स्टार्ट करते हो, यू हैव 29 Feb, March 31 एंड April, सो यू हैव वेल एंड गुड 3 months, और आप आराम से केस स्टडीज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल. अगर 1.5 days की स्ट्रेटेजी भी आने वाली है कुछ दिनों में, सो दिस वुड बी मोर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम्स. तो तब क्या रहता है ना, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी भी. अभी क्या है, अभी आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और जैसे ही फर्स्ट रिविजन कंप्लीट होता है, अगर आपके पास पहले से पता है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, तो आपको इजी हो जाएगा. अगर मैं यही अप्रैल में लेकर आऊं, देन इट बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो इसीलिए ये वाले सब्जेक्ट को आप शुरू से ही डील करना स्टार्ट कर दो. आई एम नॉट सेइंग कि शुरू में आप रोज एक केस स्टडी करो, आप कर पाओगे. ट्राई इट, स्टार्ट इट, आप कहीं ना कहीं कर पाओगे. एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे तो कर सकते हो. हाँ, अच्छा अगर स्टार्ट करोगे. 1 Feb से तो आपको करना ही करना है, बिकॉज और 1 Feb से भी मुझे डेट स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए. व्हेन यू कंप्लीट योर फर्स्ट रिविजन, उसके बाद आपको स्टार्ट करनी है केस स्टडीज, आइदर 1 per day, 2 per day, 3 per day, 4 per day, एज पर योर कैपेसिटी. जैसा आपको टाइम देना है, जैसा आपको टाइम मिलता है. ओके. सेकेंड डिवीजन के बाद जो लोग करना चाहते हैं वो 10 to मैक्स टू मैक्स 15 days से ज्यादा मत देना. बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे इस सब्जेक्ट के लिए, ऑलराइट, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. सो मैक्स टू मैक्स 15 days देना, उससे ज्यादा नहीं देने हैं, और अच्छे से केस स्टडी सॉल्व करनी है, फेमिलियरिटी बनानी है. सो फोकस ऑन दैट. So this was about the integrated business solution strategy. Hope you all liked the video. Do like, share, and comment on it. And tell me if you want some more strategy kind of videos. Thank you.